3, 2, 1, camera action, and we are going live. Okay, all right. Hi everyone, welcome on board. It's a Teachers Day special today. आज मैं आपको बहुत से लोगों से मिलवाने वाला हूँ और बहुत अमेजिंग सेशन रहेगा आज. Hi everyone, welcome. टीचर्स डे स्पेशल है भाई आज तो भाई बहुत अमेजिंग सेशन रहेगा. आज आपको कहाँ से लोग मिलने वाले हैं. You're going to be meeting some people from Germany. You're going to be meeting some snap toppers. You're going to be meeting a guy who has cracked ISB 740. You're going to be meeting our favorite Sudhanshu sir as well. Second favorite Moinak sir as well, Sahil sir as well, Vishwadeep sir. धीरे धीरे करके सब ज्वाइन करेंगे भाई. Thank you so much for all the messages. मैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाया यार, apologies for that. But आज लाइव के अंदर हम बातचीत करते रहेंगे और बहुत मजा आएगा. We'll also talk about CAT preparation as well. इनसे कुछ strategy की बातें भी डिस्कस करेंगे. Happy Teachers Day. कौन है? Hi Ravina, thank you so much for the message. Hi Gangesh, hi Kunal, hi Jyoti, Gangia, Thitila. Okay, hi Lynch. क्या हाल चाल है भाई? Thank you so much for joining in. क्या बात है? Okay, great. So looking smart today. Thank you so much. Happy Teachers Day. Thank you so much. Thanks Prateek. Thanks Pranav. क्या बात है? Houseful है. Stream को like ठोक दो and we're gonna have a lot of fun today. Acha, my humble request. Let me just check with who all people are joined in there. Hi Sritam. Hi Megha. Hi Saloni. If you guys can switch on your cam as well. Hi Nisha ma'am. That's gonna be great help. All right, great. Hi Sritam. Welcome on board. Thank you, sir. Hi everyone. क्या बात है? क्या बात? Houseful है भाई आज तो. And Prantik sir will be joining in. Hi Saloni. Welcome on board. Hi Megha. Happy Teachers Day. Hello, sir. Hello, everyone. Hi, everyone. क्या बात है. निशा मैम भी ज्वाइन की हुई है. क्या बात है. ग्रेट यार, ग्रेट. थिंग्स आर गोना गेट हीटेड अप राइट नाउ. धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन करेंगे. बाय द वे आज काफी लोग इनमें से 3-4 घंटे क्लास लेके आए हैं और सुबह से मेगा बोल रही थी सर जल्दी करना, मैं यहीं बैठी हूँ सुबह से. और प्रांतिक भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं. हे प्रांतिक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन मैन. व्हाट्स अप? Good sir, good. Happy Teachers Day sir and all of you. Happy Teachers Day to you as well man. Thanks for joining in man. How is life? How are things with you? All good? Yes, I had actually a class of 3 hours, 8 to 11. तेरी बात ही कर रहा था मैं. देख, तेरी बात ही कर रहा था. क्या बात है. Great. All right, great boys and girls. Let's get the party started. The quick introduction. Nisha ma'am is from Narsi Monji and one of the heads at CATKing. और शीतम तू तो खुद दे यार. From your journey being a student और अभी तू mentor बन चुका है, बड़ा आदमी बन चुका है. Talk about your journey. फटाफट. Sure, thanks, sir. So when I started my journey in my final year around, I was appearing for CAT 2020. And being a humanities student, मेरा तो मतलब quants कुछ भी नहीं था, ऐसा था. मतलब when I started my prep, I was just targeting around 85 percentile. और उसमें अगर KJ Somaya, Goa Institute of Management वगैरह try कर रहा था. Then I gave the CAT exam, got a 92 percentile के आसपास, got admits from baby IIMs, some new IIMs also, and MICA, all of these colleges. Sir told me not to go for these colleges because I lost an opportunity at IIM Ahmedabad. I had a weird category called जो sir is very popular, famous for. But then I decided, okay, if not IIM Ahmedabad, I'll definitely go into any of the top 5 colleges in India. So that is why I started worked in marketing roles across industries and then applied to ISB and I'm joining ISB next year. So it has very fulfilling journey and thanks to sir, especially for like that decision making help. अरे थैंक यू सो मच. नहीं भाई मैं इनको बोल दो, बड़ा सोचो. इसका कैट में 92% पे IIM अहमदाबाद कॉल था. ये गधे ने कन्वर्ट नहीं किया, वो बात अलग है. अभी बड़ा आदमी बन गया, अभी चलो ISB जा रहा है. तेरा GMAT क्या? What's your GMAT score? So GMAT also I have improved quite a lot. Like my first attempt was 610, then improved it to around 710 within 35 days. I got all abroad और इंडिया में दोनों में with 710, but then I again gave GMAT, got a 740 just to improve my verbal score. जैसे अपने आप के लिए, खुद को, ईगो के लिए. क्या बात है. So amazing. Great. Saloni ma'am, quick introduction. People who've joined in right now, यहाँ पे GMAT के भी टॉपर बैठे हुए हैं, CAT टॉपर बैठे हुए हैं, आम लखनऊ बैठा हुआ है, मुस्तफा सर भी ज्वाइन कर चुके हैं, साहिल सर ZAT के भी टॉपर है. You name an exam, they're all standing. हम ये कोशिश करेंगे 30 मिनट्स के अंदर रैप अप कर लें. जो लोग वीडियो बाद में सुनेंगे, नीचे मैं थंबलाइंस पे टाइमलाइन डाल दूंगा. आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं. Thank you so much for all the great feedback and thank you so much for all the love on the Teachers Day as well. Let's go. Great. Saloni ma'am, quick introduction please. So, hello all. I hope you all are doing good. I'm Saloni Bachawat. I'm currently living in Germany. I'm really passionate about verbal and I've been teaching verbal reasoning to students preparing for various examinations such as GRE and GMAT. क्या बात. और किसके पेट पे लात मार रहे हैं आप? बहुत ही मेरी verbal पढ़ा थी. जो people are joining CATKing for the GMAT family, so you're going to be getting trained from somebody from abroad. How cool is that? Great. Megha is a big girl here. Megha का तो salary बहुत amazing है यार. मेगा ने बोला सर मेरी सैलरी की बातें मत करना. मेगा तेरी अलग फैन फॉलोइंग चल रही चैट के अंदर. मेगा मैम का लेक्चर वाज रियली अमेजिंग. गुड यार, गुड. हाँ मेगा, क्विक इंट्रोडक्शन.
Okay, I'm Megha Ahuja. I have completed my MBA from SPJIMR 1 year, and then SCM studied the second year. I switched, and my reasons for switching is something my students know. Some of those who studied from me. And apart from that, I did my BBA from Christ. I worked with Goldman Sachs Bangalore as an investment banker. Then I moved ahead with T Shaw Hedge Fund, which is a US-based hedge fund again. I worked with them for 2 years. Right now, I'm working with JP Morgan, and I've been teaching with CATKing for the past 7 years, I believe. Yeah, with a break in between for my own studies, but it's been a period of 7 years. Overall, I have a teaching experience of around 10 years because I started teaching with my own BBA. And that's about my experience. I teach quant, verbal, LR, and AI. So my forte is not the subject only. My forte is teaching, is what I feel. So that's about me. I know most of my students complain that I don't switch on my video ever. So yeah, it takes a lot of guts for me to be in front of the camera. So thank you so much for bearing with me, guys. This is so amazing. Boys and girls, we're going to have a lot of fun today. Oh, प्रांतिक तेरी अलग ही फैन फॉलोइंग चली भाई. प्रांतिक ओपी बोलते हैं. क्या बात है प्रांतिक, क्या कर रहा है तू भाई? तू तो सुधांशु के बेट पे लात मार रहा है अपने सीनियर के. बता भाई, क्विक इंट्रोडक्शन वुड बी हेल्पफुल. भाई प्रांतिक फिर ओपी होता है भाई चैट के अंदर. Great. We are celebrating Teachers Day here. I repeat, they're all toppers here. We're going to talk about how to crack CAT strategy in the next few months as well. Prantik. Thank you. Firstly, happy Teachers Day, you too, sir, ma'am, everyone. I was actually a part of your classes during my preparation. I have actually even liked, अभी तो इतना दिन चल रहा है, I'm having more fascination and more satisfaction when LRDI case list rather than my consulting life. I'm passed out of IIM Lucknow. I worked with Penn as management consultant in deals. I am teaching in CATKing for the last 2.5 years. So all kudos to you and ma'am. They have showed a immense trust in me. Right now, I have started teaching LRDI a lot of batches, and I believe the classes are good. People do like it. That's about me, sir. क्या बात है, क्या बात. So मेगा मैम ओपी, प्रांतिक सर ओपी, फैन फॉलोइंग. मुस्तफा सर ने भी मैजिक दिखाया नहीं, पहले ही मुस्तफा सर ओपी. क्या हो क्या रहा है भाई? ये मेरे बारे में कोई तारीफ नहीं होती, सब तुम आज ले जाओ मेरा सारा टीचर्स डे का. मैं अकेला करता हूँ ना, पूरी तारीफ मुझे मिलती है. मुस्तु, वेलकम ऑन बोर्ड यार. क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम. बस सर एकदम बढ़िया. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू यू एंड एवरीवन ऑन दिस पैनल. राइट. So again, I'll quickly introduce myself to all of you who don't know me. I'm Mustafa Pitolwala, 2020 pass out from SCMHRD Pune, and I've been associated with CATKing since about 3 years. Right, अभी 3 साल खत्म होना है. Since 2020, I'm associated with CATKing. So 3 strong, fruitful, very. I mean, rather than teaching others, I've also learned a lot in these 3 years. So again, a very good experience interacting with the students, with the teachers. And generally, so again at CATKing, I think I've done everything. मैंने सारे subjects पढ़ा है almost. Right now, I'm focusing more on the SNAP topics, SNAP and the NMAT topics, and the leadership and strategy sessions for the Engage 7X students. But really has been a fun journey, and I hope this journey keeps getting fun as we go ahead. But again, yeah sir. ये मुस्तफा मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंसान है, बाकी मेरे फेवरेट हैं. इसकी शक्ल देख लो, ये और अनीशा मैम. जब तुम्हारी जीडीपीओ आ जाएगी ना भाई, जीडीपीओ कॉल, उसके बाद तुम्हें करंट अफेयर, अभी तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है ये करंट अफेयर. क्या था तेरा दिन क्या था? करंट अफेयर ट्यूसडेज. Yeah. करंट अफेयर ट्यूसडेज. तो करंट अफेयर ट्यूसडेज मुस्तफा सर पहनाएंगे भाई. इनसे अभी से दोस्ती कर लो. स्नैप आई एम अहमदाबाद भी जाना ना, मुस्तफा सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ा के जाएंगे. मुस्तफा, वेलकम अगेन. Thank you sir. Great. Okay, Sahil sir, also joined in. Let me just check with Sahil sir. And Sahil sir, are you ready? Can you just quickly share screen as well, or switch on a cam as well? Yeah, sir. Can you hear me, sir? I can hear you, but I can't see you. Sir, it's pitch dark. I'm traveling actually. Sorry for that. But yeah. Hi everyone. Happy Teachers Day to everyone. All you can hear me. I'm Sahil already. I have taught you, and I think it's a Teachers Day in terms of that. Not only you learn from me, but I also feel that I also learn from all of my students, because every single day when we see like the charts, it feels like that we're learning something or the other thing. And I just wish Happy Teachers Day to all of you, including sir, ma'am, and everyone out there. So yeah, it's actually a great day, beautiful day, and you all students make it more beautiful. Yeah.
क्या बात है, क्या बात। सो मेरी तेरी भी से पीछे ब्लैक सही आवाज जा रही है, तो पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई शुरू करते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। हाउ टू क्रैक कैट इन द नेक्स्ट कमिंग डेज। विल आल्सो हैव अ टच पॉइंट ऑन जीमैट जीआरई, और यहाँ पे सारे टॉपर बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रांतिक तेरे से स्टार्ट करते हैं। अभी आई एम लखनऊ यहाँ पे सबसे बड़ा ब्रांड है, और तेरे से स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगले 3 महीने के अंदर? क्या ये लोग क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहले तो वो बता भाई। हाँ सर, जरूर। One thing, I'll notify one thing. A lot of people will give mocks this time. Score will fluctuate. People give out, given they are like the mocks never run next year. That next year will never come. Get it from me. I have given cat twice. Next year will never come. जो होगा इस साल में होगा. Mock score can fluctuate. You need to trust yourself, trust the process, trust the material. Things do change. Your hard work will never go in vain. I scored a 62 percentile in 2019 at a 99.86 2020. So I trusted the process and it worked for me. That's so me 62% डायल से अभी फाइनली कितना आया तेरा? 90 99.86 99.96। तो बॉयज एंड गर्ल्स, जो लोग 86 अपने आप 9.86, जो लोग अपने आप को रिजेक्ट करते हो, यू गाइस कैन गेट फ्रॉम 60 टू 99.86। सुपर्ब यार, सुपर्ब, ग्रेट यार। श्रीतम, तेरी भी स्टोरी बहुत अमेजिंग है। हाउ मेनी आवर्स डिड यू पुट इन, हाउ मेनी मंथ्स डिड यू पुट इन? जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, विल दे एबल टू क्रैक कैट राइट नाउ? अभी सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं जो लोग? Sure, sir. I mean, there's no doubt about it. Like in my prep, because my background in quants was not that good, so I took a lot of time in quants. But if you're okay in quants and like slightly not that okay in verbal, उसमें थोड़ा सा मतलब ये balance करना होता है, and everything else will work out. But for a मतलब serious preparation, someone targeting more than 96-97 percentile, 6 months is enough. If you prepare for like 3 hours every day, but even if you prepare like 5 hours, 6 hours every day, and exactly 5 hours, then even 2-3 months are also good. या 5 घंटे पढ़ेंगे तो ही होगा। ग्रेट ग्रेट। चलो लेट्स गो बाय सेक्शन। फिर हम आज थोड़े स्टडी अब्रॉड की बात करेंगे, स्कॉलरशिप्स कैसे लेके आना है। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी। सो सलोनी, तू भी वर्बल पढ़ाती है, मेगा तू भी वर्बल पढ़ाती है, श्रीतम तो वर्बल का गॉड है क्योंकि जीमैट दी हुई है, और मुस्तफा तू भी वर्बल पढ़ाता है स्नैप का। लेट्स गो टू सलोनी। सलोनी, तू भी स्टैंडर्ड में सबसे आई, बिकॉज तू जर्मनी से वर्बल पढ़ाती है सपोजिटली। मैं भी पोलैंड से पढ़ाता हूँ, वैसे ऐसा नहीं है, बट हाँ बताइए, हाउ टू क्रैक वर्बल एबिलिटी? Okay, so I think the most important point which I understand, जैसे प्रांतिक सर ने भी बोला, that mocks are really important. Now that we are only left with a few days for CAT, I think the most important thing in verbal is to analyze the mock, because there's no point अगर आप mocks दे रहे हो but आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आपकी weak areas कहाँ पे है। और verbal में especially बहुत सारे अलग-अलग type के questions आते हैं। Right? Unlike cons and LRD, it's not that you will mug up all the formulas and then you'll apply them. Verbal में it's very important for us to understand कि हमारी strength कहाँ lie करती है, inference based questions और in fact based questions. तो in the end आपको एक proper strategy बना के चलना है कि कितने time में आपको कितने questions attempt करने हैं, और आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि कौन से question में आपको छोड़ देना है in a couple of seconds, in just 10 to 15 seconds. You just need to make up your mind that I'm not going to attempt this and I'm going to move. Right, so that's I think one of the most important strategies that we need to. बाकी read करते रहो, reading कभी मत छोड़ना till the end of the day. Don't skip reading at all. And also one more important point here I want to make out that ये थोड़ा सा odd है, but I think it will help a lot. जब भी आप पैसेज को पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करो, जस्ट ट्राई इमेजिनिंग द डिटेल्स। अगर आप उसे स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद रहेगी, एंड देन यू वोंट हैव टू गो बैक टू द पैसेज अगेन एंड अगेन टू सर्च फॉर योर आंसर। सो आई थिंक दीज 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज बहुत ज्यादा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लेट्स गो टू क्विकली मुस्तफा, तू भी आजकल पढ़ा रहा है, तेरा क्या स्ट्रेटजी है? इफ यू सेइंग इफ दे हैव टू क्रैक वर्बल एबिलिटी फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव, कैट तो है, तू तो स्नैप का भी टॉपर है, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी ऑन वर्बल एबिलिटी? अब क्या करें? So again, one very important thing which Saloni ma'am highlighted, which I also keep telling my students, number one is keep reading, right? So read anything, read everything, and like so generally practice जब होता है ना, when students practice quant, LRDI, they fix a time, they solve some questions. Reading is very simple. Train में बैठे हो read कर सकते हो. You are traveling in a cab, you are waiting for someone, you can just open your phone and read, right? So I think number one advice which I give my students is read a lot. Reading के benefits short term में नहीं दिखेंगे, right? You have to be consistent with it. ठीक है? And second is, so I'll give only 2 tips. One is reading. Second is in the paper verbal में in general terms जो बोलते हैं तुक्के मारना. लोग जनरली तुक्के बहुत मारते हैं, I think this is right.
I think this is not right. Don't Correct. do that tukkebazi in verbal. Build those inferences. Try to understand what is written. Try to understand the question. Try to understand the options as well along with the question. Okay. So don't and a lot of times, especially in papers like Snap, CAT, जहाँ पे time बहुत कम होता है and questions बहुत ज़्यादा होते हैं. People do a lot of तुक्केबाजी where they just go with the flow. कि okay ये सही लग रहा है होगा. They tick it and they go ahead. But read carefully. Speed बढ़ेगी reading की. Right. Make sure you read the question as well as the options carefully. Build those inferences and then answer. So I think these two tips are my 2 cents on verbal. बहुत ही बढ़िया यार. दिस इज सो अमेजिंग. आई जस्ट टेल देम लाइक अ सिंपल हैबिट टू फॉलो. मैं भी वर्बल थोड़ा सा बता देता हूँ. मैं इनको रोज बताता हूँ. आज इनसे सुनते हैं. दिग्गज लोग आए हुए हैं, एग्जाम्स के टॉपर्स आए हुए हैं. तो भाई मेरा बस टिप है, डेफिनेटली रीड. 2 तरह के लड़के होते हैं. एक तरह के बंदे होते हैं श्रीतम जैसे बंदे, जिनका वर्बल शुरू से अच्छा होता है. यू नो श्रीतम, जरा शुरू से वर्बल अच्छा था कि एंड में तूने पढ़ के नहीं किया? सर, मतलब आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन. मुझे 4 साल पहले जब मैं मुंबई आया था अंडरग्रेड से पहले, मेरे को बोलना नहीं आता था. So that is something that I have practiced throughout by reading and everything. अच्छा हाँ, बहुत ही बढ़िया. you have to put in that effort to get the results. Simple. या तो श्रीतम जैसे बंदे, तो मैं उल्टा एग्जांपल, श्रीतम मुझे पता है इसका बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ. फ्रॉम गेटिंग इन IIM अहमदाबाद कॉल टू क्रैकिंग इन ISB फॉर अ GMAT 740 एज वेल. तो यहाँ तो तुम वेल रेड हो, बचपन से ही कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, सब कुछ बढ़िया, अंग्रेजी में टॉपर हो एक्सेट्रा. या मेरे जैसे श्रीतम जैसे हो, हमने पढ़ के वर्बल इंप्रूव किया है. ठीक है. वी कैन डू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बट एग्जाम के अंदर अगर RC आएगा तो अपन फाड़ निकालेंगे. ठीक है. प्रांतिक, तेरा क्या हाल था इंग्लिश में? वर यू ऑलवेज लाइक स्टड इन इंग्लिश के पढ़ के निकाला भाई? नहीं सर, आई वॉज नॉट एट ऑल गुड इन इंग्लिश. मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए तब बढ़िया था. सो आई यूज्ड टू अटेम्प्ट RC. आई नेवर अटेम्प्टेड ऑल द 4-5 क्वेश्चंस. आई यूज्ड टू गो फॉर द लो हैंगिंग फ्रूट्स. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आता था. One RC which I felt comfortable, I used to attempt that particular RC, the entire 4-5 questions. बाकी दो करके. बढ़िया. तो भाई जितना आता है दूसरा आता है, नंबर कैसे लेके आने. तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, रोज के 2 RC सॉल्व करने शुरू करो, बिकॉज RC के 16 क्वेश्चन आने वाले हैं. और साथ में पैराजंबल, पैरासमरी और तुम्हारा आउट ऑफ कंटेक्स्ट जो, और पैरा कंप्लीशन. 16 क्वेश्चन ये और 8 क्वेश्चन ये जो VA सेक्शन वाला है. इधर पिकअप RC, एक RC हमेशा इजी आता है, और साथ में बैठ के अपना ये जो पैराजंबल, पैरासमरी है, वो तो इजियर होता है. वो तो आपको करने ही करने हैं कम वॉट में, वो आप छोड़ ही सकते. तो वो या उस पर ध्यान दे दो या RC पे ध्यान दे दो. ओवरऑल टू बिकम अ कैट टॉपर, डेफिनेशन ऑफ टॉपर 99%. अगर आपने एक RC सॉल्व कर लिया और साथ में 4 पैराजंबल, पैरासमरी सॉल्व कर लिए, हाँ 4 पैराजंबल, यू गेट 8 क्वेश्चंस व्हिच इज अबाउट 92, 94, 95%. और सेम चीज अगर आपने 2 RC सॉल्व कर लिए और साथ में 4 क्वेश्चन जो RC मेंटेन किए, व्हिच इज 12 क्वेश्चन, राइट, यू आर डेफिनेटली टचिंग 97, 98. इनफैक्ट लास्ट ईयर तो 99% है. तो गेम है 2 RC तक पहुंचना है और साथ में पैराजंबल, पैरासमरी इजी वेल सॉल्व करने. यू गॉट बी गुड टू गो. क्या बात है भाई. एक और बड़ा आदमी ज्वाइन करिए. हाय तन्मय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. तन्मय इज ज्वाइनिंग. अरे तूने अभी तक निटी लिखा हुआ है भाई साथ. अभी IIM बॉम्बे कर दे भाई. यस सर, वो कहीं पर रेक्टिफिकेशन बाकी है. अच्छा, कहीं भी क्या A सर ने very happy Teachers Day to everyone. थैंक यू सो मच. क्विक इंट्रोडक्शन भाई. तन्मय तेरी चैट दिखाई थी मैंने बच्चों को. तन्मय इज फ्रॉम IIM बॉम्बे, पर बाकी ये खुद बताएगा. तन्मय, क्विक इंट्रोडक्शन. Hey everyone, this is Tanmay Khare. I'm a current second year student at IIM Mumbai, or NITI Mumbai, and I'll be basically planning to specialize in strategy and marketing. I did my summer internship at Reliance Emerging Leaders Program at the RIL conglomerate group. Previous to that, I was working in the IT sector for about 1.5 years. क्या बात है. And how was the journey at CATKing? When did you start? So I joined CATKing in the year 2021 as a student, and then like I've been associated with CATKing ever since, and I have recently joined the mentorship group of CATKing as well. So a lot of you will be seeing me, available for the mentorship part as well pretty soon. जिस बंदे को IIM बॉम्बे जाने के सपने, अभी IIM बॉम्बे इज मेकिंग न्यूज, तो इसकी शक्ल देखोगे. अंदर जाने के पहले तुम्हारी GDP की तैयारी करवाएगा. और अभी आई थिंक सेकंड ईयर तेरा, यू आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स, राइट, क्रैकिंग. क्या बात. So very great. Let me just check with Moinak. I think Moinak will be joining in like next 30 seconds. Oh, Moinak is live. Hi everyone, please welcome Moinak. Good seeing you, man. I was waiting for you. How are you? Hello sir, all good. क्या बात है. Happy Teachers Day, mate. Happy Teachers Day. Thank you sir. आपको भी happy teachers to everyone present here. क्या Oh, बात है. काफी सारे लोग हैं आज.
आज हाउसफुल है भाई, आज बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग मोइनक क्विक इंट्रोडक्शन 30 सेकंड वाला भाई। मोइनक सर ओपी ऑन द चैट हो जाए। लौंडा 4 घंटे पढ़ा के आया है, ये भी आज वर्बल में मेरे पेट पे लात मार के आया, लिटरली मेरे पेट पे लात मार के आया। हाउ वाज द क्लास बाय द वे? Oh my God, it was so, I don't know how you do it every day. Like 3 घंटे बोलने के बाद I was just sitting with dinner, I was wondering कल का काम कैसे करूँ, and you're doing it every day. Hats off firstly to you and ma'am. But मजा आया, it was a lot of fun. I think net interaction खुद मिला के 1,500 बच्चों के साथ तो हुई है. I've never interacted with so many kids in one go. It was good, fun. Looking forward to Thursday now. Yes, coming to the introduction, I think more or less सबको पता ही है, आज भी introduction मिल ही गया था. So, as you guys know, I'm Moinak from FMS batch of 21 to CAT 18, got 98.71 fortunately. और FMS जाने का मौका मिला. From there, I joined the Tata Administrative Services, and currently I handle mergers and acquisitions for large deals in TCS BFSI in my second stint in TAS. So this is the overall brief about me. Res been with CATKing, I think 5वां साल अभी entry हो रहा है. So I look into things like mocks, mock solutions. I recently started looking into LOD Bibles, verbal ability, CAT prep, GDPI prep, etc., etc. चलता ही रहता है. So long running, fun journey with Sumit sir, Anisha ma'am. So looking forward. CAT prep का sir आज काफी doses दे दिया इनको. I think nothing much from my end. अभी Thursday continue करेंगे इस पे. बस अच्छा भाई देखो, जो लोग कैटकिंग फैमिली के ऑलरेडी, मोइनक सर लेट, मोइनक सर क्लास वाज आई ओपनर, मोइनक सर वाज इन टुडेज फायर इन द क्लासरूम, आरसी वाज दिमाग के कपाट खोल दी, बहुत बढ़िया. मुझे डर लगता है मेरी फैन फॉलोइंग ना कम हो जाए. मोइनक तो जब भी कोई बोलेगा मेरी थोड़ी तारीफ करे, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ तेरी. हाँ एब्सोल्युटली सर, आप तो ओपी हो ही. अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बट तुम बस ओवरऑल अपने पब्लिक का फायदा होना चाहिए. बट आई एम रियली हैप्पी. थोड़ा सा मुझे इनसिक्योरिटी तो होता है, बट कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, चलता है. चले भाई, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स लॉक टू द सेकंड सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग. कौन बताएगा भाई? एलआरडीए कौन पढ़ाता है यहाँ पे? लेट्स टॉक, सभी पढ़ाते हैं वैसे. लेट्स गो टू मेघा and then we'll go to Prantik and then we'll go to Tanmay and then we'll take inputs from everyone. हाँ भाई बताइए, बताइए भाई. प्रांतिक तेरे से शुरू करते हैं, तू बड़ा एलआरडीए पढ़ाता है, बच्चे तेरी अलग ही फैन फॉलोइंग है, बताओ भाई. I believe first 5 minutes for LRDI is a make or break because here we are coming to the set selections. ऐसा होता है कि a lot of time we select a set, we work on it for 10 minutes and then we realize कि ये नहीं बनने वाला है. So not only we are losing 10 minutes, but also the pressure we are creating on ourselves is huge, and that it carries on with the quant section as well. So take your time, don't panic. First 5 minutes, there is one set which you can solve particularly, and you should be solving one. There is one set which you will find which is not at all probable to be solved because it takes a lot of time. You should leave that question. If you get stuck in that set, then it's probably very difficult to come up from that. So the first 5 minutes, transverse all the question, go through the sets, take your time to read the paper and select a couple of sets from there. That's great. तन्मय तू बता दे यार, तू तो करंट स्टूडेंट है अभी, आई एम बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा है. I know you are an expert with the CATKing for mentorship and GDPI also, but you gave CAT recently. सबसे नया CAT तूने ही दिया अभी, और and you're a student. क्या ज्ञान देना चाहेगा DLR के लिए? Right. So as Prantik sir already mentioned, set selection plays a very important role because I'll tell you, I kind of screwed up my DILR section, I would say, because I got stuck in one particular set. So basically what happens usually is that you tend to get stuck in those kind of sets जहाँ पे तुमको लगता है कि तुम्हारा confidence level बहुत high है. So while we were studying with Sudhanshu sir, we used to solve a lot of analytical puzzles जिसमें numbers बहुत अच्छे होते हैं. So being an engineer, I was always fascinated seeing numbers and all those things. So when I saw that particular puzzle, I got stuck with it, and that I ended up wasting a lot of time on that particular puzzle. So the most important part is you need to realize when to leave that particular puzzle so that you can find out another puzzle and get those 4 questions done. क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई. ये भी बता कि क्या नहीं करना. ओवरऑल तेरा पर्सनल क्या था? Overall was 98.34. Okay, 98.34. That's so amazing. Great यार. तो भाई एक भी क्वेश्चन पे अटक मत जाना. DLR में एक क्वेश्चन पे अटके तो फिर अगला साल आएगा CAT 24 वाला, तो वो थोड़ा सा देख लेना. मोइनक, व्हाट्स योर टेक? तू तो DLR भाई पेपर फाड़ देता है ऐसे करके. मोइनक पेपर स्क्रीन में से घुस के पेपर फाड़ता है. व्हाट्स योर टेक ऑन DLR?
Yeah, DL has always been a favorite section. काफी मजेदार सेक्शन रहा है. CAT 18 में it was my savior section. 19 में तो और बेटर हो ही गया था. तो इस साल मैंने सब बच्चों को बोला है, टेल मी व्हाट सेक्शन टू डू. ऑल आई एम थिंकिंग कि इस साल के CAT में आई ओनली डू ईदर वर्बल या LRDI. दो में से एक सेक्शन करके मैं क्वांट छोड़ दूंगा फॉर श्योर, ताकि इनका परसेंटाइल ना चला जाए. तो LRDI, I always tell these guys, मेरे को याद है प्रांतिक जब स्टूडेंट होता था, मैंने भी तब उसको यही बताया था that 12 सेट इनको बनाना है. 12 सेट वो कुछ भी बना के लेके आ जाएंगे, राइट? प्रांतिक के yes, I mean 12 sets, 4 each in each slot, right? And Prantik's professors are very good in making sets which irritate you a lot. मेरे को भी CAT 18 में दिया था इन लोगों ने. So you will never have a concept of syllabus. You will never have a concept of knowing every type. The only concept which sustains you during the exam is the ability to find the condition which breaks all other conditions, right? कई बार ऐसे tabular format में सर कुछ दिया होता है कि सबका average 45 होगा. So उससे इतना समझ में आ जाता है, ठीक है, अगर 45 होगा तो 48 के ऊपर जो भी सारे values निकल रहे हैं उसको हटा दो, फिर उसके बाद question को देखो. So it always comes down to the way you solve, and that is exactly what we focus on in the mocks. Prantik focuses during classes. वो condition breaking पे ध्यान दो guys. वो data note करना, condition ढूंढना और उसका mid point निकालना, that is the most important thing, and that stays. Whether it be win, games and tournaments, DI based LR, LR based DI, puzzle based DI, all this doesn't matter. Okay? Yeah. So as long as you can master that, वेल इन गुड. मेरा स्टोरी लगभग सबको पता ही है. 29 मिनट एक क्वेश्चन करके बैठा था, 31 मिनट्स में 16 क्वेश्चन करके निकाल दिया, 17 ऑल वर करेक्ट, 99.73 आ गया, राइट? नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स आई वाज वे मोर एफिशिएंट. आई वाज एबल टू गेट 90, आई थिंक 99.8 था मेरा इन LRDI. ऑफ कोर्स आई गॉट मोर एफिशिएंट. आई डिडंट पैनिक अनलाइक लास्ट ईयर. So irrespective of whatever you do, if you have set a process during the prep phase, it will show up on D-Day. कुछ भी हो जाए, okay? प्रोसेस नहीं होता है. अगर आप हवाबाजी में मॉक निकालते हो, if you get this caught up with these 99 percentiles or these subgroups that form, and हवाबाजी में मॉक निकल जाते हैं, but you don't have the process, you'll not be able to sustain the pressure of D-Day. और वो प्रेशर के अंडर जो बॉक डाउन हो जाता है. आज सर मैं क्लास में ये समझा रहा था इन लोग कि 2 आवर CAT पेपर के पहले जो 4-5 घंटे का फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर लेना पड़ता है, एग्जाम हॉल तक पहुंचो, 1.5 घंटा वहां पे जो वेटिंग रूम है वहां पे लोगों का टाइम पास सुनो, दैट इज एक्सट्रीमली एग्जॉस्टिंग, राइट? सो ओनली व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयरिंग 1500 meters, विल यू रन अ 1100 meter रेस प्रॉपर्ली. तो वो मेंटालिटी लेके चलो LRDI में, जरूर अच्छा होगा. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. I think we can keep on talking about this, but let's go to, I think Preet sir is also joining. Hi Preet sir, if you can hear us, just switch on your camera. तो सुधांशु सर भी आ रहे हैं भाई, 1 मिनट और वेट करो. और लास्ट के बस 5 मिनट रह गए और हम एक वन फाइन पॉइंट लेंगे सबसे और मजेदार बातें करें. Preet, can you hear me? If yes, just unmute yourself as well. Hi sir, hello everyone. Happy Teachers Day to Preet. क्या चल रहा है तेरा भाई, कहाँ घूम रहा है तू? सर मैं मूवी देखने आया था हैप्पी टीचर्स डे टू यूट्यूब. तो अभी मैं सोचा कि यूट्यूब लाइव है तो मैं भाग के बाहर आया, किसी गली में घुस गया हूँ. अभी मुझे पता नहीं वापस कैसे जाऊंगा, वहां पे बहुत शोर हो रहा था तो मैं अभी कहीं रैंडम आ गया हूँ. बट मुझे बहुत लोग मैसेज कर रहे थे कि सर आप आए नहीं, तो मैं इंस्टाग्राम पे भाग के आ गया फटाक से. कैसे हो सर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हैप्पी टीचर्स बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स अ फुल CATKing फैमिली हियर. 1-2 बंदे भी मिसिंग है हमारे इंपॉर्टेंट वाले, पर उनको भी आपको मिलवा देंगे. ओहो, हमारे नारुतो साहब भी आ गए हैं. क्या बात. सुधांशु, वेलकम भाई, वेलकम. Thank you, sir. Thank you so much. Hey, everybody. Happy Teachers Day to all of you. I hope, we are all having a lot of fun. I was, into something, but I had texted Anisha, and now, I am hoping that सब लोग with a complete house full है, with Preet also joining in. I think now, I believe everybody is here. क्या बात है, फुल हाउस फुल है भाई. चलिए भाई सुधांशु सर ओपी होते हैं, प्रीत सर ओपी होते हैं. प्रीत तेरे आते ही बंदे बढ़ गए और सुधांशु तेरे आते ही और भी बंदे बढ़ गए. क्या बात है, हाउसफुल भाई, हाउसफुल. अच्छा, एक छोटा सा काम करिए, स्ट्रीम को लाइक ठोक दीजिए. हम काफी देर से लाइव कर रहे हैं. सुधांशु और प्रीत आप लोग लेट हो, बट कोई बात नहीं, टीचर्स डे का दिन है, टीचर्स को तो माफी है. तो और कुछ नए लोग भी हमारे मतलब पुराने लोग हैं पर आज जुड़े हैं, और उसमें से क्या नाम है, मुस्तफा का पहला लाइव चल रहा है. मुस्तफा तो पहली बार आया ना, कहाँ गया मुस्तफा? श्रीतम का पहला लाइव है. मुस्तफा लाइफ में तो एक आधी बार ही आया ना? नहीं आया हूँ, इस साल का पहला लाइव है. फॉर दिस ईयर इट्स माय फर्स्ट लाइव. वो पहले करता था 30K. पहले तो काफी करते थे, पहले तो काफी लाइव करते थे, अब थोड़ा लाइव
तुम्हारा लोग नहीं होते थे हम। मुस्तफा सिमरन आ जाओ भाई, लाइव करना है, 40 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्या बात है, क्या बात। अच्छा भाई, नाउ वी गोना डू टॉक अबाउट द एंड पार्ट। अभी कैट सिर पे खड़ा हुआ, इधर उधर की बातें छोड़ के लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन। अनीशा मैम NMIMS टॉपर, नारसी मुंजी के अंदर घुसोगे, अंदर जाके भी GDP की तैयारी करनी कंपनीज के लिए, उसके अंदर आप भाई अगर कैटकिंग फैमिली ज्वाइन करते हो तो ही इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू एज वेल। अंदर जाने के पहले जो आपका मेंटरशिप चाहिए फॉर अब्रॉड एज वेल एज इंडिया, ISB, ही इज जॉइनिंग ISB दिस ईयर। 740 ओल्ड कैटकिंग स्टूडेंट नाउ मेंटर विद अस। सलोनी मैम जर्मनी से पढ़ाते हैं, जो लोग GRE GMAT के लिए ज्वाइन करते हो इनके साथ पढ़ते हो। मेगा मैम की अलग ही फैन फॉलोइंग है, बिकॉज मेगा मैम का पैकेज बहुत ज्यादा है और उनका मेगा मैम का भाई भी हीरो है, और मेगा मैम LR और DI के एक्सपर्ट है और वर्बल भी पढ़ा रहे हैं। प्रांतिक सर आई एम लखनऊ में है, स्टड है, अभी दाढ़ी में कुछ ढूंढ रहे हैं और आप इनको जानते ही हैं। और मुस्तफा सर से दोस्ती यारी बना लेना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्यार तो इनसे अलग करोगे, स्नैप तो क्रैक करवाएंगी, बट करंट अफेयर ट्यूसडे दोगे दिसंबर ऑनवर्ड्स। मैं खुद बैठता हूँ, ठीक है, वो मैं चुपके से बैठता हूँ मुस्तफा को बिना बताए हुए, और क्योंकि मुझे इंटरव्यूज लेने होते हैं तो आई नीड टू गेट अप्राइज्ड विद ऑल दिस थिंग। और तन्मय की शक्ल दोबारा देख लो, तन्मय वाज स्टूडेंट 2 years बैक। तन्मय तेरी तारीफ कर रहा सुधांशु, तेरे कारण उसका DILR उड़ गया, तुमने इतना DILR पढ़ा दिया कि उसने जाके, तन्मय बता, सुधांशु ने तेरा कैट बर्बाद करवा सुधांशु सर की गलती नहीं है। अरे इसमें गलती वाली क्या बात है, ऐसी गलती तो हम खूब करना चाहते हैं। सो आई थिंक यार बहुत अमेजिंग है। आई थिंक Tanmay, you've done well. You are here, part of this panel. I'm hoping that this is also a good enough motivation for all the people who are watching us. कि भैया, मचा दो. You also get to be a part of this team. If you do well and if you want to sort of come to the other side of the table and join and contribute and do really really well with us, that's also something that we'll welcome you. So अभी इस वाले सेशन में भाई 82 days to go, वोट देना है। क्या बात है, ग्रेट यार, ग्रेट। मोइनक सर आप जानते ही हो, वर्बल पे मेरे पेट पे आज ही लात मार के आए हैं, 4 घंटे पढ़ा के आए हैं, और सुधांशु भी सभी वर्बल ही पढ़ा रहे हैं अभी, तो मोइनक सर अलग फैन फॉलोइंग है। मोइनक सर और सुधांशु सर तुम्हें कराएंगे फाइनेंस फ्राइडेज और FMS के टॉपर, और नौकरी भी लगवा देंगे बाय द वे। हाँ, ये नौकरी भी लगवाते हैं, ऐसे फ्री में नौकरी नहीं, FMS जाओगे इनके जूनियर बनोगे तो आपको हेल्प करेगा। प्रीत सर की जादू की क्लास होती है, और मैं और सुधांशु सर भी मजाक उड़ाते हैं कि इतना क्या करवा लेता है, और फैबुलस क्लास, प्रीत सर की अलग ही क्लास, सुधांशु सर की अलग ही फैन फॉलोइंग है। आई एम लखनऊ के हैं और ये भी फाइनेंस फ्राइडेज करवाते हैं जब आपकी GDP की कॉल आती है। ग्रेट, लेट्स रैप इट अप क्विकली, रैप करते भी 10 मिनट लग जाएंगे। अनीशा मैम, 1 pro tip, 3 months to crack CAT, verbal, quant, LRDA, what's your take? One take from everyone. बताइए अनीशा मैम। Okay, so I think you have got a lot of subject experts out here. I'm going to give you guys only one secret that you need to make sure to crack your exams is, please be consistent and put in all your best efforts. It's the hard work that is going to pay off on the day of exam. You will be more calm, more confident on the day of exam if you have put in your best efforts. So put in everything that you have, study every day, and don't get bogged down by negative energies. Trust me, you'll have a lot of people in and around you coming and telling you that this is not meant for you, this is not your cup of tea, be it your friends or family. Ignore everybody and just make sure you keep working hard. बहुत ही बढ़िया। और अनीशा मैम के साथ दोस्ती मेंटेन रखिएगा। GDP में जब आपका कॉल आएगा तो she manages the entire team of adding you to the WhatsApp group. तुम्हारे इंटरव्यूज, more than 6,000 plus interviews are scheduled. So day 1 from your induction से लेके एंड तक जो तुम्हारा वो टीका लगा के अंदर भेजते हैं ना IIM के अंदर, तो मैम will be managing all those sessions when you guys converting it. श्रीतम भाई, our ex student now entering ISB, बताओ भाई अपनी स्टोरी बताओ। और स्टोरी तूने बता दी है, क्या टिप देना पड़ेगा? 1 pro tip. मतलब almost everyone helps us with like academic affairs, like पढ़ाई का तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा. So I'll just say one thing that when it comes to taking decisions around which schools to join or taking decisions around like strategy of appearing for one exam or one school or anything, please listen to sir, because that is the proest tip that I can give you. There's no word as proest, but that should be the primary aspect of your second step after giving your exams. Talk to sir, talk to ma'am. Both of them are very helpful and approachable, and they are always here for you. All of us here are also always here for you. मत बोल भाई, मैं बिल्कुल अप्रोचेबल नहीं, गलत बोल रहा है, मेरे को प्लीज पिंग मत करना, मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ। श्रीतम गलत मैसेज मत दे भाई। हाँ, वंस यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली, एक बार क्लास में हो तो हाँ, क्लास पढ़ाने में क्लास पार्ट ऑफ द फैमिली का ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, उसमें लोगों को कोई भी नहीं कर सकता, आप सर क्या कोई भी नहीं कर सकता, आप तो फिर भी बहुत करते हैं,
बहुत कमेंट्स रिप्लाई करते हैं, मैंने खुद देखा है। शुरुआत में लाइव सेशन चालू होने से पहले ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कमेंट आ रहे हैं, सर रिप्लाई कर रहे हैं बैठ बैठ के। वो कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन रिप्लाई करता हूँ, वो गारंटी है मेरी। ग्रेट यार, थैंक्स फॉर द प्रो टिप बॉयज एंड गर्ल्स। 740 जी मैट। सलोनी मैम फ्रॉम जर्मनी, बताइए भाई वर्बल क्या प्रो हैं आप, ओवरऑल क्या बताना चाहेंगे? 3-4 महीने रहेंगे कैट को। Okay, so I think काफी सारी जनरल टिप्स तो आपको यहाँ सबसे मिल ही गई है। I'll try to give an underrated suggestion जो यूजुअली लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। Just take care of your health, especially needed for verbal section। ये मैं ऐसे जनरली नहीं बोल रही हूँ, but in order to crack verbal section with 100% accuracy, it's very important to keep your mind calm. Because अगर आपका लास्ट का जो 3 months है वो स्ट्रेस में जा रहा है, and if you're not able to maintain your calm, then you won't be probably able to practice passages and maintain accuracy. So yeah, that is one important tip that I want to give. बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। मेगा मैम बताइए, व्हाट्स योर प्रो टिप? आपने स्नैप भी क्रैक किया, एनमैट भी क्रैक किया, SIBM SPJIMR दोनों थे आपके पास, और इसने SIBM छोड़ के SPJIMR ज्वाइन किया, उसका रीजन बड़ा ही पर्सनल है, मैं पूछूंगा नहीं, बस बताइए मेगा मैम। एंड हाईएस्ट प्लेस्ड गर्ल फ्रॉम SPJIMR एज वेल। पैकेज मुझे बताना अलाउड नहीं है, बताइए मेगा मैम। Okay, so I think a lot of tips have already been given, but if I have to talk about something, I'll just say when you are trying to shoot an arrow, the farther it's pulled behind, the farther ahead it goes. So you need to make sure the more that you slog, the more you're going to make it. I mean, the better you're going to make it. So make sure in the slogging period, you do not get demotivated. You do not get sad as to why I have to work so much. As Rahul sir had mentioned, some people are it's easier for them. They might be from convent. For example, it was easier for me. I would not say that I understand your struggle completely. But for subjects like verbal, for quant, if you're not very good at it, you need to slog more. But you also need to know that if you're working further hard, you will go further ahead. So just stay motivated, stay happy, and also know that you're working only for yourself and for your parents, not for anyone else. Keep that in your mind. Remember that they're always there looking at you and expecting from you. So just work hard with a happy smile on your face, because they want to see you happy and not sad at the end of the day. So your slogging should give you happiness. So that's all. Too much I know, but yeah. That's so amazing. That's so amazing. Let's go to Prantik. Prantik भाई, तेरी भी अलग फैन फॉलोइंग है। प्रांतिक सर ओपी अभी तक चल रहा है। मेगा मिसेस फायर, ग्रेट यार। बताइए भाई। हाँ भाई, मोइनक सर गुस्से में क्यों लग रहे हैं? मोइनक सर गुस्से में नहीं है, मोइनक सर क्लास पढ़ा गया है 4 घंटे, अभी बेयर विद हिम, तो मोइनक सर ऐसे ही दिखेंगे 4 घंटे के बाद। हाँ भाई प्रांतिक सर बताइए, प्रो टिप, फाइनल प्रो टिप बिफोर वी लेट यू गो। I'll tell one sentence about Moinak sir. Moinak sir was the person who took my interview during my CAT selection. My first interview was I am Koikot. Moinak sir actually took my interview on behalf of CATKing. Just a small thing, guys. This hustle is worth when you come to the other side of the gate, this side, the role you get, the happiness you get. 82 years are worth because you get happiness of 82 months after that. So I believe struggle for that happiness. Life is better in the other side. बहुत अमेजिंग, बहुत डीप बात बोली तूने। बिल्कुल यार, ये कर लो MBA बाद में जब जाके बबल बस्ट होगा, पर बबल बस्ट होने के पहले तुम्हें बबल मिलेगा एक, ठीक है, कि यही सब था, पर पहले वो बबल ले लो, फिर बाद में लगेगा बस यही सब था क्या, बस यही MBA था, वो बाद में होगा, पर पहले वहां तक पहुंचो। प्रांतिक वेल सेड यार। मोइनक तेरी क्या बात है यार, वो प्रांतिक लड़का तेरा पढ़ाया हुआ ग्रेजुएट भी हो गया अभी। सुपर मैन, सुपर ग्रेट। मुस्तु सर प्लीज, ओवर टू यू। So from my end, just 2 tips. Number 1, be consistent, because ये जो 3 महीने वाला लास्ट लैग है ना, that is where people start losing hope, start losing the consistency कि यार मेरा होगा नहीं होगा, double thoughts आते हैं दिमाग में. So I mean, just keep all of that aside and be consistent. Right, very simple tip, but very difficult to do. Right, so be consistent every day. Try to make sure जो study के hours है, जो classes है, right, you don't miss your classes, you don't miss your mocks. Be consistent in all of this. And second tip, listen to all the faculties that are here, because I know you guys are going through all the classes from all of us. And sir to hey, sir comes on YouTube, sir takes your classes. Listen to all the tips that are given in these classes. Right, listen to them very carefully. Along with whatever you're studying, listen to the tips which all of these people are giving, because all of them are giving these tips from their experience. And especially Sumit sir, सर आपका तो सालों का यही एक्सपीरियंस है, एंड यू कम फ्रीक्वेंटली ऑन यूट्यूब इन क्लासेस. लिसन टू देम, ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू नॉट जस्ट विथ योर कैट बट इन लॉन्ग टर्म इन योर लाइफ. सो प्लीज लिसन टू ऑल दीज ब्यूटीफुल टिप्स, ब्यूटीफुल एडवाइसेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस. बिल्कुल थैंक्स यार। सुनो सबकी, करो अपनी, बट जब तक कुछ मिल ना जाए जिंदगी में, तब तक अपने से बड़े वाले की सुन लो,
चाहे वो मोइनैक है, चाहे वो मेघा है, चाहे वो सुधांशु सर है या तन्मय है, इन लोगों ने किया हुआ है, तो जस्ट फॉलो दैट, अपना दिमाग मत लगाओ। टू योर मुस्तफा, एडिंग इट टू योर थॉट, वी ट्रेन पीपल फ्रॉम IIT बॉम्बे एज वेल। मैंने एक बात नोट की, IIT, NIT, बिट्स पिलानी, ये सब लोगों में और नॉर्मल लोगों में ये फर्क होता है कि NIT, IIT, बिट्स पिलानी हवा में नहीं उड़ते हैं। वो जब भी मिलते हैं ना, बोलते हैं सर बताइए कैसे करना है, सर बताइए सर, सब पता होता है, पर बताइए सर कैसे कर सकते हैं हम, सर बताइए आप, हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई डू इट। एंड रेस्ट ऑफ द जनता जिसको कुछ भी नहीं, वो अपना हवा में उड़ रहा है। एंड दिस IIT Bombay kids talking, they come and meet me as well, like बताइए, and their parents are also involved, they're very humble and they always ask these questions, they are like an absorbers. So people who learn this skill, they are also only going to be at the top. So wisely said that इनको सुनो, किसी की कोई ना कोई बात लेके आगे बढ़ते जाओ भाई। चलो, दिस सो अमेजिंग। तन्मय भाई, लास्ट 4 फॉर द डे, तन्मय, प्रीत, मोइनैक एंड सुधांशु। तन्मय जी। Right. So I would say अगर अभी तक मॉक देने स्टार्ट नहीं किए हैं, which I know there will be a lot of people who, you know, are still scared of giving mocks because they believe they've not covered the whole syllabus. So देखो, syllabus तो कभी cover नहीं होने वाला है. There's no end to this. You know, the fact that you'll never be able to cover the syllabus is the truth. And you should start giving the mock soon if you have not started it. And if you have started it and you're still getting demotivated that you're getting low scores, so I'll tell you, I have scored as low as 48 raw score in a mock, and I still ended up getting around a 98 plus in the overall section. So like, you know, analyzing the mock and then you know, trying to figure out what basically wrong you're doing and what kind of you know, mistakes you're committing. There must be a pattern to it. So you need to understand all those things so that you can you know, eliminate or avoid doing all those things on the actual exam day. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तन्मय, थैंक्स डन, एंड बी इज जूनियर एट टाइम बॉम्बे यार, पर पढ़ाई करते रहिए। लेट्स गो टू मोइनैक। मोइनैक, मॉक की बात हो रही है, मॉक के जो जितने भी वो क्या बोलते हैं, एनाग्राम बोलते हैं ना, सारे मोइनैक के वर्ड्स के अंदर भी है, MOCK। मोइनैक सर बताइए भाई, व्हाट्स योर पार्टिंग थॉट? Yes. So parting thought, I think more or less has been summarized by everyone. Okay. Rest तो सर हम आपके like thanks to you अपना verbal boot camp के थ्रू ज्ञान दे ही रहे हैं, तो more or less that is all in place. But you know, one thing I wanted to point out, मैं आज सोच भी रहा था when I was just going through our material, is that you know, there's one thing, very important thing that to learn from you. You know, I was just wondering, would we आप वो नेटवर्किंग वाला एस्पेक्ट एज वेल एज यू नो कंट्रोलिंग एवरीथिंग प्लस मेंटेनिंग अ बैलेंस, उसको जिस तरीके से मेंटेन करते हैं ना, दैट इज समथिंग रियली कमेंडेबल. एंड मैंने सोचा दैट इफ आई हैव द एनर्जी टू कम बैक एट नाइट, आई एम नॉट यूज्ड टू डूइंग दिस, I would definitely like to mention that, and that's something you know, I have picked up from you this year, trying to manage, balance things in a very, very good way. And this, you know, I feel guys is very important even for your CAT perspective. मतलब आज बहुत सारे लोगों की बहुत कॉमन डाउट रहता है कि जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करें. गाइस, फाइंडिंग दैट बैलेंस एंड आंसर लाइज इन यू. ओके, लाइक राहुल सर राइटली मेंशन्ड, जैसे अगर आप अभी नहीं हो, जो आपसे बड़ा है, जिसने किया हुआ है, उनको एक बार इंस्पिरेशन की तरह देखो. So I would say if you just look at everybody over here, you know, everyone present on this panel, कोई ना कोई या तो कॉलेज करके आ रहा है, या तो कोई जॉब करके आ रहा है. They are here, they're balancing things out. Okay, so I think there's nothing more motivating to show you and teach you in terms of how to balance and how to be a manager. And in the essence, यहाँ हम सब हैं आपके लिए, and you are doing these things rightly, as Megha ma'am mentioned, for yourself and your parents, right? So if you just keep that in mind, automatically आपका balance, mock scores, demotivation, accuracy, concentration सब sort out होना start हो जाएगा. Okay, so I would just say stay tuned over here. You know, we are there for you. काफी कुछ कर रहे हैं, classes मिल रहे हैं आपको, mocks हो रहा है, workshops है, boot camps है, GDPI program आने वाला है. All we ask is just be consistent and you know, stay in the race. और कुछ नहीं, लगे रहो, हम हैं यहाँ पे. Okay, so that's all from my end. सुपर सुपर। एंड जिनको नहीं पता है, हर महीने की स्टार्ट के अंदर मैं और मोइनैक, इंस्पायर्ड बाय सुधांशु, हम लोग 5 दिन का डे, सुधांशु तेरे को देख के हम भी रोज पढ़ा रहे हैं अभी वर्बल एबिलिटी, तो हम रोज वर्बल के बूट कैंप्स कर रहे हैं. और साहिल सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सुबह 9 से लेके 12 बजे तक. एंड मोइनैक सर तो एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे कर रहे हैं. हम मंथ की स्टार्टिंग के अंदर कर रहे हैं. सुधांशु सर पूरा का पूरा मॉक सॉल्व करते हैं. और सैटरडे संडे फुल ऑन बिजी. जो लोग अब ज्वाइन करने वाले, ऑलरेडी ज्वाइन करे हुए हो,
अभी मेहनत करने का टाइम अभी है, तो इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन. ग्रेट. प्रीत सर, ओवर टू यू. लास्ट पार्टिंग थॉट. ऑलराइट, हाय. अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है बिफोर वी स्टार्ट, बिफोर आई से एनीथिंग. सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं ये बता रहा हूँ, बाकी सब जनरली ये बता देंगे. तो जनरली कोई तो कुछ बता ही नहीं रहा है ना? सब अपना स्पेशलाइज्ड ही बता रहे हैं, बाकी सब बता देंगे. तो मैं बताता हूँ बाकी सब क्या कहना चाहते हैं. तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज अपन हनीमून वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे. आज अपन थोड़ा फैमिली लेवल कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? तो लास्ट 3 months इज योर बेस्ट ट्रिगर दैट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है? मैं एंड ऑब्जेक्टिव बताता हूँ. एंड ऑब्जेक्टिव है, लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी कि मॉरिशस, महाबलेश्वर और मलाड, ठीक है? इस बार हम गाड़ियों की बात करेंगे. गाड़ियों में या तो आपको मिल सकती है मैक्लारेन, या तो मिल सकती है मर्सिडीज, या तो मिल सकती है मारुति. अब जैसे ये मोइनाक सर बैठे हैं, वो BMW बेंच उठा के चलाते, एकदम फुल पटेली, है ना? सुधांशु सर बैठे एकदम नारुतो की फोटो वोटो लगा के. ऐसा कुछ नहीं है, ये तो यही सब की बात है. एकदम सब टॉप लोग हैं ये लोग, ठीक है? तो प्रांतिक ने बहुत ब्यूटीफुल बात करी थी कि दैट लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल ऑन दिस साइड ऑफ द कैमरा स्क्रीन. एंड लास्ट 3 months है, ये 3 महीने है जो एक्चुअली गोइंग टू बी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल. एंड यू हैव टू गो क्रेजी, मतलब एक्सट्रीमली क्रेजी. अभी किसी ने बोला था कि मॉक में से 48 आए थे, एंड फ्रॉम 48 एंड कमिंग ओवर हियर इज अ फैंटास्टिक थिंग. And before I wrap it up, I would also like to point out that I was a student of Rahul sir a few years back, and when I completed my exams and I got my scores and everything, randomly जब GDPI की preparations चल रही थी, तो अनम्यूट. तो राहुल सर ने मुझे बोला कि एक काम करेगा, कल तू मैथ्स पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? मैंने बोला है, ऐसे कैसे? तो randomly found out that I was very fond of teaching, and he asked me to teach. We did a demo class and students liked it. So I think बहुत कम लोग हैं जो ऐसे diamond को ढूंढ सकता है. So I'm very thankful to Rahul sir that I am a teacher today myself. It is because of him. And very happy Teachers Day to all the people present on the panel today. You're inspiring everyone, and that is fantastic. Thank you so much. क्या बात है प्रीत, थैंक यू सो मच. Also, I would just like to add one thing. Because of you, Sumit sir, we all are here. So thank you so much to you. I think it's been amazing to be a part of CATKing family. So thank you so much. थैंक यू सो मच यार. भाई मैं हमेशा बोलता हूँ यही फैमिली, ये पूछते हैं कैटकिंग फैमिली क्या है. ये फैमिली है, तुम देख लो. ये श्रीतम मुझे मिला था जब IIM अहमदाबाद की कॉल आई थी, फिर रिजेक्ट होके मुझे मिला था, और अभी IIS भी जा रहा है. और प्रांतिक को सुधांशु ने पढ़ाया था, उसका इंटरव्यू मोइनाक ने क्लियर कराया था, अब आके वो लोगों के इंटरव्यू करवा रहा है. सुधांशु ने तन्मय का पेपर खराब करवाया था ज्यादा पढ़ा के. तन्मय बहुत एक्सपर्ट बन गया और LRD मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने लग गया, उसका एक सेट में अटक गया. तो अभी तन्मय आके बदला ले रहा IIM बॉम्बे जाके, और बोल रहा कि IIM बॉम्बे को IIM लखनऊ से बेटर करूंगा. सुधांशु से बदला ले रहा है, ये जोक मार रहा हूँ मैं. बट यार मतलब इतना प्यार करवा दिया था पढ़ा के, समझ रहे हो? तो दिस इज द फैमिली. मेगा और हम 7 साल से जानते हैं, और प्रीत सर वाज अ स्टूडेंट व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट. हम तो भी मजाक कर लेते. प्रीत तो याद है, फर्स्ट बेंच पे बैठता था लड़कियों के साथ, तो सब याद है मुझे. तो बट या दैट्स द फैमिली यार. सुधांशु, ओवर टू यू मैन. द लास्ट पार्टिंग थॉट्स, द टीचर्स स्पेशल. सर थैंक यू सो मच. आई थिंक 2 पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ. एक पॉइंट तो ये है कि इफ थ्रू द मॉक्स, पहले तो सारे मॉक्स में मॉक्स अटेंड करना शुरू करो. जितने भी लोग हैं मॉक अटेंड नहीं कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट मेरा तन्मय ने चोरी किया था, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा 12 to 3 मॉक एनालिसिस के अंदर आके बैठने का ही है. वी हैव टू एनालाइज इट रियली वेल. मॉक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. तो मतलब ये मत सोच कि एक दिन आएगा कभी हम जाके मॉक करेंगे. that day is never going to come. That is point number 1. वीकनेस का पे काम करने का समय है अभी. 1 महीने 1.5 महीने बाद सिर्फ पैनिक होगा. वीकनेस पे काम करना है तो अभी कर लो. So that is one important aspect which I would want to discuss. Second, I would want to discuss, लास्ट वाले में भी एक 80-20 रूल किया था, यहाँ पे फिर से एक 80-20 दूंगा. 80-20 बहुत सिंपल है कि जो मेजर इम्पैक्ट होता है किसी भी टॉपिक में, वो 20% जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से आता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं टाइम्स, अब लेट्स से अरिथमेटिक की, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज एवरेज रेशियोज, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलेगा. अलजेब्रा में जो की है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक हो गया, उसके अंदर मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलेगा. तुम वीडियोस उठा के देखो पुराने वाले, हर पुराने वाले वीडियोस में भी कुछ बढ़िया कंटेंट, बढ़िया टॉपिक मिल ही जाएगा जो हमने डिस्कस किया हुआ है. वीडियोस निकाल के देख. इनफैक्ट राहुल सर भी बात करते रहते हैं. ही डज सेशंस एवरी डे व्हिच इज सो अमेजिंग. ठीक है, फॉर ऑल द पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कैटकिंग फैमिली, पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ कैटकिंग फैमिली आल्सो, ही डज इट रिलेंटलेसली एवरी डे टू हेल्प यू एवरीबॉडी, टू हेल्प ऑल ऑफ यू हु आर देयर. सो आई थिंक वीडियोस निकाल के देख. हमने ऑलरेडी बात करी हुई है कि कौन से वो 20% टॉपिक हैं जो 80% इम्पैक्ट करेंगे. अगर मैं कैट के हिसाब से बात करूं तो
वो टॉपिक्स को पहले लगाओ और वीकनेसेस के ऊपर काम करो। ये 2 चीजें हैं। और तीसरा मॉक के बारे में ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। That is something which I want to add to all of you and wish you all the very best. जुड़े रहिएगा. Don't give up on your dream. I think give up on your dream is giving up on your dream is the worst thing that one can do, right? So don't do that. ठीक है? या तो जैसे for example सुमित सर भी बोलते रहते हैं ना कि या तो यार let I am reject you. तू रिजेक्ट मत कर अपने आप को. तू जाके उधर रिजेक्ट हो जा, अपना बेस्ट देके रिजेक्ट हो जा. That is more satisfying than giving up in the month of September, October. So वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, अपने को हमको बाद में टेक्स्ट करके बता देना कि सर अपना बेस्ट दे दिया था, हुआ नहीं, कोई बात नहीं. That is also acceptable. लेकिन बेस्ट तू देखे तो आ यार, मतलब तब मजा आ जाएगा. I would like to add something to what Sudhanshu sir said. जैसे कि आप सर बोलते हैं सुमित सर कि let the bloody IIM reject you, ऐसा आप बोलते हैं. So I have been rejected from an IIM Ahmedabad, but I always also, this is a very common quote, but it says like shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. So IIM के लिए prepare करो. आप definitely कोई अच्छे top 10, top 5 भी स्कूल में जाओगे. And sir actually does not show this so much, but we also have a very strong set of faculties for GMAT, GRE and study abroad mentors and everything. Like verbal goddess NMIMS. So बहुत सारे अच्छे teachers हैं. Please try to take their help. And sir also actually helped me a lot in my ISB application process and everything. So thankful to you, sir. And I hope everyone actually tries their best in terms of applying to different schools and different exams. All the best. Kya baat hai. Super VR, this is so amazing. Rahul sir, I usually don't pitch in without you asking me to. But I'll pitch in here and I'll just say 7 years back when I met Rahul sir, it was the same humble man that I'm meeting today. That day also, he made me feel as if I'm superior to him. And today as well, he makes all of us feel as if we're superior to him. So one thing that I learned from him, and I would request everyone to follow, that would be the best tip for your lifetime, is have gratitude and be thankful to everyone who's taught you, even if they've taught you 1 inch of an A. So just remember that that's something that they've done for you. One second, I'm in the middle of a call, Rahul. That's my brother, sorry. So that's all I wanted to say. That's so sweet. That's so sweet. Thank you so much. Thank you so much. Great. Okay, so I think we've all shared a lot of our inputs and insights on the Teachers' Day special. Rahul sir, why don't you share your special tips and advice for all the students on Teachers' Day? I mean, all of us have been your student, and coming on this side, I'm sure there'll be a lot of others who would want to be the next ones coming this side and want to hear from you. नहीं सारे मेरे स्टूडेंट नहीं थे. ये मोइनाक और सुधांशु तो मेरी उम्र के ही हैं. वो तो मैं ये ऐसे मत बोलो यार. चलो सर, 80% हम आपके बच्चे थे. ऐसा कुछ नहीं. मैं कुछ नहीं बोलना चाहता. रोज मेरी ज्ञान सुनते. I just want to tell you one thing. These 3 months are going to make you or break your life यार. ठीक है. You want to argue with me? IIM is not everything. This is not everything. FMS is not everything. IIM लखनऊ तो ठीक ही है. निट्टी IIM मुंबई. वो बातें, वो अंगूर खट्टे वाली बातें हैं. तो 3 महीने bloody turn the world upside down and crack a top business school. ये जितने भी हैप्पी चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनके पीछे बड़ी सारी मेहनत गई हुई है ना. तन्मय, मोइनाक, मेरे तो बाल भी गए हुए हैं. तो अभी और शीतम ऑफ द वर्ल्ड और प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ द वर्ल्ड. ओ हीरो राहुल. अरे हैप्पी टीचर्स डे. क्या हुआ भाई, बड़ा आदमी है. अभी इसकी फिल्म आ रही है. तेरा प्रोमो कर दूं मैं? ऐसे ये मुझे लगा सिर्फ आपका कॉल है. कौन है और कॉल लाइव है? तू YouTube पे जा रहा है. 500 लोग देख रहे हैं तेरे को अभी. सॉरी. ठीक है. आई टेक लीव. चलो get on the call. बाय. हाँ, ये भी CATKing फैमिली अभी हीरो है भाई. ये बड़ा आदमी बन गया. ये इसकी नेटफ्लिक्स पे भी आर्चीज करके मूवी आने वाली है. उसके अंदर स्टारिंग नेक्स्ट टू सुहाना खान एंड एवरीथिंग. तो उसको बोलना कर दी तेरी प्रमोशन मैंने. ठीक है. नेवरदलेस तो बस कमिंग बैक. तो अंगूर खट्टे वट्टे वाली बात है. अभी मेरे को कुछ नहीं पता है. टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन. ब्लडी sacrifice all these movies. And I always say every time you're going to watch a movie in the next 3 months, somebody's studying at home for those 3 hours. You will also go to IIMA. He will also go to IIMA. Your IIMA is going to be Ahmedabad. His IIMA is going to be Amritsar. समझ आ रहा है? तो अभी तेरा फालतू जो दिल करे ना, वेकेशन जाऊं, ये जाऊं, वो जाऊं, ये सब चीजें अभी दिमाग में आने का नहीं. जैसे ही विचार है उसको छोड़ दे. अभी क्या मॉक देते थे तुम्हारे विचार दिमाग में आ रहा है. मेरे भी आता था कि अभी ना मैं खत्म करते ही ये यहाँ जाऊंगा, फिर वहां करूंगा. ये चुप कर. देखो प्लानिंग में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है. ओनली थिंग यू शुड प्लान इज कि सैटरडे को आके सुबह 9 से लेके
कैटकिंग फैमिली वाले जो है रात को 9 बजे तक कैसे लेक्चर अटेंड करने हैं, कैसे क्लासेस अटेंड करनी, रात को कैसे बैठना है, क्या पढ़ना है मुझे, और कुछ सोचने का ही नहीं है. Last thing, every time you have any negative thought in your head is going to have some kind of practical implication. वो बाहर आएगा कहीं ना कहीं से. तू बोल के देख अपने बारे में बुरा, कुछ बोलने का ही नहीं है. लोग बोल रहे हैं shut the fuck up, close your ears and move on. तभी आप सक्सेसफुल रहोगे और खुश रहोगे. बाकी ज्यादा ज्ञान हो गया, बाकी छोड़ो. थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट. कीप किलिंग. और थैंक यू एवरीवन. थैंक्स तन्मय, सलोनी भाई. एक कमेंट के अंदर हैप्पी टीचर्स डे कर दीजिएगा पक्का, और अच्छा सा कमेंट. अगर आपको मेगा मैम पसंद है, सुधांशु सर, प्रांतिक सर, जो भी है, किसी के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिखिए फॉर श्योर. हम गिव अवे अनाउंस करें. देयर गोना बी 5 बेस्ट, 5 नहीं चलो 10 बेस्ट ऑफ द बुक्स. माय टीम विल चेक आउट द बेस्ट ऑफ द कमेंट्स. और अगर आपने कुछ चैनल से सीखा है वो पक्का बताइए, और 10 किताबें आपके वे के अंदर होंगी और वो कल मैं अनाउंस करूंगा. ठीक है भाई. थैंक्स सुधांशु फॉर जॉइनिंग इन. थैंक्स प्रांतिक, लव यू मैन. प्रांतिक कमेंट ही पढ़ रहा है, ऊपर देख ले. ठीक है. It's buzzing. The comments are so many. It's buzzing. That's why I was. And everyone, दिल से thank you guys, all the teachers at CATKing. When I say it's a family, it's a family. मैं दिल से बोल रहा हूँ यार. And after teaching for 4 hours of class and the entire day at office, Moinak is still here. And after the entire day at office, Sudhanshu is there. After his hectic life at Tanmay is there. Saloni is managing time zones with the Germany right now. Megha with JP Morgan, she's managing it. Shritam is entering ISB, and so with Prantik and so with Danisha ma'am. So whatever you doing is really commendable. I wholeheartedly thank you guys. We exist because of you, yaar. We exist because of you. And CATKing is the soul. मैं सुधांशु और मैं उससे उस दिन बात करते. We're all contributing to the same. कल को मैं हूँ नहीं है, सुधांशु है नहीं है, तन्मय है नहीं है, but there should be some 5, 6, 10, 20 people who are going to be contributing this to the soul, so it helps. Keep on helping people. That's the entire objective. So thank you once again, and have a good day ahead. Bye bye. Take care. Love you all. Thank you, sir. Thank you so much. Everyone. Thank you. Bye-bye. Thank you. Happy Teachers Bye-bye. Day, A everybody. very happy Teachers Day, everyone. All Happy the best Teachers and happy Day. Teachers Day. Bye-bye. Thank you. Happy Thank you. Teachers Day. रुको.